Is everyone here okay with Hindi also so that I can like use bilingual? Or anyone else have a problem with Hindi? Or I can just keep it in English also. Okay, I think there's no problem. So Yes, we are no problem. yeah, sure. So like first I'll give my brief introduction. So yeah, yeah. So I'll give my brief introduction. I'm Sauvik Mandal, as already been introduced to you. Did my B.Tech in mechanical engineering from yes NIT Durgapur and passed out in the year of 2020. So talking about what I have done after my this graduation, I was preparing for GATE. So unfortunately, like my rank was not that good enough to land me a public sector job. I got all India rank of 545 in mechanical engineering, and COVID also hit at the same year. So unfortunately, didn't get shortlisted for any of the public sectors. So I like went on to join the job that I had achieved or obtained through my campus placement. So actually I did my internship at St. Gobain, India, and then I got a pre-placement offer from the same company. So then in the month of November I joined, and then I worked there for 6 to 7 months. But to be honest, it was not working out for me. I was not liking the profile that much. So using my GATE score of the year of 2020, I kind of got an admission and joined the MTech program for solid mechanics and design at IIT Kanpur. And I stayed there for the first semester, but that also did not suit me. So after the first semester, I kind of dropped out and I was looking for a career in the consulting field. So I was giving interviews for management consulting firms, and fortunately I landed a job like just this back December 2021. And I joined Acuvon Consulting, which is basically a management consulting firm based out of Gurgaon, actually Noida. And yeah, I've been working there for as an analyst for the past 2 months. And yeah, that's a little about me. So actually, I would like to keep this in the interaction like a little bit interactive, this session. So if you have any questions, we can like keep it as a like a question and answer session, so that if you have any questions about GATE, like if it's in mechanical engineering, then it will be easier for me to answer. Nevertheless, I will try to answer in any branch, like if it's from any branch. And if you have any questions from if you want to make a career in core or non-core, any consulting firm, or even in IT and all, so I'll try to answer answer those questions, because there's not much to say. Like I've not achieved a lot in my life so that I can talk about like the other speakers that I've been seeing that have been attending the Student Alumni Meet. So can we keep it like that, like a question answer interaction? You can ask me questions about like GATE or any other career choices that you have, or even defense also, and I can answer those questions because there's not much to Yes, say sir, it's about me. fine. It's fine. Yeah, Debolina. So you can continue. We can keep the meet interactive. It will be great. Sure, sure. Don't call me Sir Debolina. It's Bhaiya will be okay. And so first of all, I'd like to tell you like about GATE. Like if many of you hopefully will be preparing for GATE for maybe MTech or maybe for going well, to land a public sector job. So I'd like to tell you how to approach that exam. So if I can speak for the core branches like for mechanical, electrical, civil and electronics, not so much about the computer science and IT because I'm not much experience in those fields. So for the core branches, I'll say like just the studying the material that you get from college, or just, you know, going to the college and attending those classes won't be enough. So I'll kind of suggest you to go for a good coaching. I actually did my coaching from MedEasy, Kolkata. I was a student at their this for 1 year, actually for 2 years, both ESC and GATE combined. So I went there. So if you are actually preparing for GATE,
So I'll suggest you to take a good coaching. It doesn't matter like yes, it matters like a lot about which coding center you're joining, but mainly it matters on your self efforts. So obviously in these times it's not possible for the classroom coaching. So the online coaching is actually the trend. So you can actually join some good coaching classes for that. And yeah, so what I did after my coaching, actually, many of my relatives, many of my friends were suggesting me to take a drop and prepare for GATE again so that I can give GATE in the next year and maybe try to acquire a better rank that will land me a job, PSU job. Like my main for target and focus was always to get a job, not for MTech and all, but that didn't work out. So I had to go for the best option that was available to me. But for public sector jobs, that if you are aiming, I'll yes, GATE is actually a very good option. So bit overview of the GATE and talking about MTech and whether do like to do MTech or not to do MTech as the second point on the poster. I'll tell you like it all depends on your interest because first of all, I was also interested in the MTech to, research more into my own field, into the core field to understand more and to like, yes, it's all okay up to a point, like your interest, what matters and everything. But at the end of the day, you have to see like what is the job prospects also, because I have always been job oriented. I have never had much of an interest in the higher studies and all. So I was just looking at the opportunities that was available to me after I will do my MTech. So if you want to go for higher studies, I'll kind of suggest you to go abroad first of all, because let's face it, the job market is not that good in India. I will not say like bad because for the very old IITs, like the top 4 to 5 old IITs, like jobs are good. But for core branches, yes, the placement percentage is less. So if you have the opportunity and if you are able, like financially and both, a lot of aspects are there to consider for higher studies. So if you are able, you have the opportunities, and I'll definitely suggest you to go out and go abroad and do your masters, be it MS, be it MBA. So that's one of the suggestions from me. But talking about MTechs from IITs and ISC and everything, it actually all depends on your interest because the job prospects are not that good. Like that's the truth, harsh truth. That is one of the reasons that I also kind of dropped out. But maybe because of the pandemic and all, the opportunities were not that good in the this year 2020 and 2021. In the next coming years, maybe 1 or 2 years, it will improve. Like obviously, it will improve in all industries, but you should keep that in mind. If you're going for this MTech and all, you should have that kind of mindset that even if I don't get a job, I should continue in this field, maybe get a PhD and go in the academic line or go in the teaching line, become professor or something, and in the research line, actually, like to be honest. But you should have that mindset. It is not very like, to be really honest, you might not get a job also because like if you're from CS and IT, then you don't have to like think about it at all because it's very easy for you to get a job. Even from BTech, MTech, anything you can get. So even after MTech also you have a lot of opportunities. So, but for core, all my juniors, all my friends from core branches, I'll tell like kind of suggest you to, think it through because at the end of the day, everyone wants a job. Even for, at least after MTech, if you are spending 2 more years, you would like to get a better job, a better paying job. Maybe like just 2 lakhs more than the BTech job is not sufficient for you. So that's why you should think it through. And talking about core and non-core, me being a core mechanical engineer, I'll say like I was actually like I was okay in studies. So it's not like I didn't like mechanical engineering. I loved mechanical engineering. I like the subjects. I like all the fields. I wanted to work in a production or I wanted to work in a manufacturing firm, but it didn't work out. The first firm, like Saint when I worked for Saint Gobain, yes, I liked it and all, but somehow I kind of felt that this is not the right fit for me. This is not my cup of tea.
So I kind of slipped out from there and gave MTech also a chance. That also didn't work out. So finally I joined a consulting firm. So it's all depends on your interest, all depends on your choice, because once, and you should be very careful about your first job, because once you have taken your first job, like for the first year or the first 1 or 2 years, that is how you create the foundation. Like for me, if I'm working in a consulting firm for next maybe or 1 or 1.5 years, then that's my base. It is very difficult. It becomes very difficult for you to get switch to another field completely. From going from, for example, going from sales and marketing to an operations, or from going from operations to a sales and marketing. So you should think your choices very like properly before making it. So can we now ask a little few questions, because I don't know, I don't have much material to say. So if you guys ask any questions or any doubts you have about any of the exams and all, it will be better, because then it will be Hello, interactive. Bhaiya. Otherwise, yeah, yeah, sure. This is Ashish from Mechanical Engineering, third year. Yeah, So I've got some questions, like the way you said that you got internship from Saint Gobain, and also you have got like a good rank, 545. So it seems like you were a good student in mechanical engineering, at least from the data that you have given. Uh, like keeping it aside, well, like if given a chance to you to switch to again a core company, okay, like it's just a question. uh, this is why I'm asking is that by your score and by your internship basically. So will you will you shift? yeah, that's actually a very good question. The thing is, like, yes, I would definitely switch, first of all, like, to answer your question. And yes, like, it's actually does not depend much on what kind of a student you are. Like, I will say, like, I was like okay in studies or like rank and all, but actually it depends on your interest. Like many of my batchmates who had like who you scored well and among the top 5 or among the top 10 of our batch, they many of them went for like other non-core jobs, like mainly basically in consulting and consulting firms and all, which basically has very less to do with what you have studied in your BTech 4 years. So for me also, but since I really like the core field, and if given a chance and if given a very good opportunity, because obviously if I'm working in this industry for consulting firm, and if I'm getting a, like, let's face it, it's money also matters, right? So if I'm getting a particular amount of salary, and if I'm getting an opportunity from a core field, but the salary doesn't match or is not up to the standards, then I would probably not switch. But if it's a job that I really like, maybe maybe a automotive sector or something, and it's really interesting for me, yes, I will definitely make the switch, because I've been always interested in the core field. So yeah. So by the data, of course you were. So are you thinking of giving it again? Yeah, actually this time I will give, like, for student mechanical, civil, like all the core branches, everyone gives gate. Even if you have prepared or not prepared, it doesn't really matter. You have filled the form for like 1,500 to 1,000 rupees, you will Exactly. go to the center and give the exam. So it doesn't matter whether you're prepared or not. So same is the case for me, because I'm also a mechanical engineer. So I will also give this time, like, I'll be sitting for it. I don't have much hope, because I was not able to prepare. But yeah, I think at least from our batch, at least from your batch, I think most of the people will be giving GATE from the core branches. So it's an exam that everyone gives, right? It's like JE means. Yeah, that answers my question. Yeah. Thank you. Yeah, 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 sure. Anyone else? Hello, Bhaiya. Good evening. I am Nasir from Civil Engineering Department, second year. Yeah, yeah, nothing. Go ahead. Yes, Bhaiya. Actually, I want to ask you, means, can you suggest us a roadmap for clearing gate?
right from second year. Means second year is a crucial year, and this actually means this is the penalty. I can say this is the first year where we should be preparing for GATE. So can you suggest as a roadmap, means studying in the college and managing things for the GATE also? Yeah, sorry. So you're in second year, right? Yes, bhaiya, fourth semester. Yeah, fourth semester. Yeah, that's actually a very good time to start GATE preparation because you still have 2 years and now you can give GATE in your third year also. Yeah, so you will at least get a good chance to see your preparation. So talking about the roadmap, actually, like since you're from civil engineering department, I had a lot of friends and colleagues, now colleagues, who actually like took coachings and everything from like Medici or any of the coaching centers. So yeah, it will be a little difficult for you because like most of the coaching centers that actually like they are in Kolkata. Yeah, acha, you are in like at your homes, right? You're not in the college. Yes, bhaiya, online classes. Online classes, yeah. So then it's okay, I guess, because for us actually it was what like we had to every weekend we had to travel and stay for 1 or 2 days in Kolkata, do the like coaching and then come back on Sunday night. So for you guys, I'll say like start preparing for now, from now only. Focus on the subjects that are actually like, that carry more weightage. For example, in civil engineering, I guess soil and RCC carry a lot of weightage. Soil RCC structures and yes, fluid mechanics also. So concentrate on the first, you should concentrate on the subjects that carry more weightage, complete them, and then go for the, subject that has low weightage. So for a second year student, I'll tell you, like, don't, pressurize it. Don't take that much pressure on you. You don't have to like start this right now. Let the fourth semester, right? Okay, just let the fourth semester like let complete it. Then you can start your preparation because it's college, so we can all understand how much we want to study in the second and third year. But yeah, it's a good thing that you have thought of preparing from the beginning only. You have a lot of time and you can give gate twice. So on the first time you can actually see your preparation. So yeah, like, get yourself enrolled for the classes. Like leave this semester, don't go for the online classes from fourth semester only. From fifth semester you can start, so you'll get two good years and get yourself enrolled for the online test series also so that you can check your and monitor your progress from time to time because and complete one subject. Like I've seen many of the friends also did this mistake. They do not complete one subject and then move on to the another. So first complete one subject because for online I don't know how the online paradigm is working, like how they take the classes because at our times they used to complete one subject then move on to the second one. I don't know how it's working right now, but yeah, don't take that much pressure. And like contrary to what people used to say, actually, like for gate 2022, many of the PSUs actually started recruiting, like as of so Coal India, IOCL, maybe ONGC. So many of actually they have expressed their interest to recruit. It is what contradictory to many of the people who were saying that PSUs will actually stop recruiting from GATE. So yeah, that's a lie. Don't fall for that. But yeah, you can, just start preparing for third year. Just, enjoy the second year. Don't take that much pressure if you're in second year. Start from third year, I'll say. From fifth semester it will be okay because third actually the main subjects, yes, the second year is the foundation, the subjects, but we all know like how we are attending classes in college and all. So the main thing is you have to do self study. You won't get much from college in terms of content and material. So start from third year, but like pay a little bit attention, like since it's online classes it is very difficult to keep track of time and actually of attention also. So I'll just say, just keep it mellow for this semester. From next semester, you can actually like get a good grasp and prepare well. And there are many, like, I don't know about 2021 batch from 2020, many of the people like this time they gave gate and got good ranks.
So you can get in touch with them also, like Sanjay Yadav is there, and like many of my friends are there who got good rank, and some of them are working in NBCC and many of the reputed PSUs. So you can get in touch with them. They can give you a better idea and perspective, because from civil it's a different branch. But yeah, that's what I will say. Keep your preparation. Like now also, if you want to prepare, you can prepare. Like focus on the subjects, because since now the most important subjects have not been touched, have not been started. They will start in third year for any branch, like for civil mechanical. So now you can concentrate on like maths, because maths also kind of covers like about 15 marks. So you can concentrate on maths, you can concentrate on the general level. It's like the 30 non-technical part. You can keep preparing for that, so that you get a good grasp of that. And then you can start for the technical subjects, because many of the students that do a mistake is they don't concentrate much on the verbal part, verbal reasoning, and the English part, and that's where they lose marks. And in GATE, that even 1 mark, like you get one mark less than a guy, and the difference in rank may be like 100, 150. For example, like in my year only, my score was 72.22 out of 100, and the cutoff for IOCL in that year was 73. So you can understand like those precious, even 1 mark, like the value of 1 mark. So focus on that. And unfortunately, that 1 mark was I would have got. I lost it in the English section only. So just focus on those things also. Many of the people don't focus on that, and that's where they lose marks. So focus on those non-technical parts, and then technical part is something, you know, that depends on your preparation. So English and maths are actually very scoring parts. So focus on that for now. Then from third year, you can focus, a little bit more seriously. Don't take that much pressure. हो जाएगा. इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. इतना लाइक सब बोलते हैं गेट गेट गेट, इतना बड़ा कुछ है नहीं, बस प्रिपरेशन सही रखो, हो जाएगा. Yes, but actually the main concern is we are means doing online classes right from our first year, and I don't see in myself like I have gained so much skills that can be monetized in the present sector. So that is the problem, and that I think that GATE is the only option left that I can be preparing for. I can assure for a better future. या एक्चुअली वही है That कि is the मतलब hopeless situation. Yes, bhaiya. नो नो इट्स ओके. एक्चुअली वही है, बीच बीच में वो होता है ना कि कभी हो जाए PSU प्राइवेटाइज हो जा रहा है, तो भैया वो बहुत सब जन इशू भी मतलब ये सब. हाँ, वो एक्चुअली माइंड पे बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है. बट डोंट लेट दैट गेट इन द वे ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, आई कैन लाइक डैम श्योर assure you that you'll be prepared for at least for your campus placements. बिकॉज अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके सब्जेक्ट्स का जो नॉलेज होगा, अगर गेट लेवल का आपके पास नॉलेज है, आपका कैंपस प्लेसमेंट तो बहुत आराम से हो जाएगा. ये तो मैं गारंटी दे ही सकता हूँ. बाकी एप्टीट्यूड जो पूछते हैं, वो दैट इज समथिंग जनरल दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर अपार्ट फ्रॉम द एप्टीट्यूड एंड एवरीथिंग. इन टर्म्स ऑफ कोर सब्जेक्ट्स, जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जितने भी हैं, ये सब आपके इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे दैट यू वोंट हैव टू वरी अबाउट इट ड्यूरिंग योर कैंपस प्लेसमेंट्स, बिकॉज द फाउंडेशन विल बी बिल्ट. So it doesn't like, even if that depends, if you entirely want to do another job, like if you want to go for a management consulting firm, or if you go for a consulting firm, then your preparation level should be different, because they don't care about your technical subjects. वो मैकेनिकल सिविल जो मिले, केमिकल सबको उठा लेते हैं. तो उनको वैसे भी उनके काम में भी टेक्निकल का कुछ फर्क पड़ता नहीं है कि तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं तुम्हारी ब्रांच की. For them, the preparation will be different. So that also I will tell you a little later. For that field, the preparation is different. But if you want to, like, if you're sure that I want to go for the core field only, if you want to go get a job in the core field, then your preparation should be, I'll tell you that, should prepare for GATE. Because if you're preparing for GATE, many of the examinations get covered, like Bark also, and ESC is a little bit more than GATE, but it is all the same pattern. ESC, GATE, and many of the PSOs actually take their own exams also, like I believe in NFL, NRC, and everything. So for them also, you'll be prepared.
So yeah, that's how you should approach GATE, and don't fall for this misconceptions. Everyone is saying कि GATE private, you know, प्राइवेटाइज हो जाएगा PSO and SEO and all. तो जब होगा तब का देखेंगे. अभी at least that's the best opportunity you have. So at least give it a try. नहीं हो तो कोई बात नहीं. You should not have any regrets that you did not try. Yes, we have one last question. Means Sure. is college and means some study materials these are sufficient to qualify GATE, or we must have to means join some coaching centers also? Like, is there Uh, any evidence? Is there any testimonial to this? Like any one of the seniors or anyone has qualified the GATE on their own with the help of their college and some books? yeah. So इसका तो मैं actually yeah. Actually, this is very difficult to answer because I am like I took coaching, but I had a friend who did not take any Yes, coaching. yes, we are sorry to interrupt, but yes, can you share us the difference that you felt by joining coaching and other students who were not getting coaching? Yeah, sure. So actually क्या होता है like if you're taking coaching, it is actually because the syllabus is vast. Like for GATE, it's a huge syllabus for every like if I categorize it, there will be like 13, 14 subjects. So in subject, there is always a limit. Like if I want to study for GATE and if I open a YouTube, if I type on the YouTube that GATE or material for GATE, you'll get like what 1,000, 2,000 links. So you don't know what to like up to what in extent you have to study. अभी अगर मैं like for example fluid mechanics में I'm just giving an example. If I want to study about I don't know maybe viscosity, तो viscosity का मैं ऐसा हो सकता है कि there are 5 pages. There is a lot of content, but that much is not required for you. So you will be wasting your time. You're not doing your research. If you want to do your research, you can do it like after joining MTech and all. But उतना आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा. तो कोचिंग में क्या होता है, वो लोग आपको बता देते हैं कि ओनली दिस मच इज रिक्वायर्ड. So you go through it. You don't have to go through the rest of the stuff. If you want to go through it, you can go it on in your own time, but that is not going to help you with your gate preparation. So that is what the main difference between coaching and non-coaching guys. Coaching वालों को थोड़ा एक like perspective मिल जाता है कि this is how much I have to study. Apart from that, I don't have to worry about the syllabus कि हाँ मेरा syllabus cover हो रहा है कि नहीं. तो cover हो जाएगा. Like they design the course in such a way that the entire syllabus is covered. So that is one of the major reasons that I joined a coaching center, because if you like, but it's not a compulsion, obviously. I have a friend who actually got a very good rank without taking any coaching. He used to do self-study. But also, if you're doing a self-study and you're not joining any coaching, you should be very careful about the material and the content that you're choosing. You should, in that case, many of the people what जो coaching नहीं करते हैं, they buy, for example, many of my friends bought handwritten notes. वो handwritten notes मेडीसी के ही थे. So basically what they are doing, they are for the syllabus part at least, they are referring to the coaching centers. So they get the extent about how much I have to study. And then they can go like, then, you can carry on your preparation. And there, for non-coaching guys, like books are there. For example, like, DLP, you get distance learning programs are there. So you'll get the books at least. And one thing that I personally felt that many of the books that these coaching centers give, like they are full of content that is not required for the gate. Like it's huge. For MEDC example, I never touched a book from MEDC. Like all I did was study the notes. So मैंने आज तक MEDC की एक भी book touch नहीं की. Apart from the workbooks, like the content, like the theory book मैंने touch नहीं किया, because that is not required. That is like बहुत ज़्यादा दे देते उसमें. So that is the main thing. Yeah, you should, if you are confident कि मुझे यहीं तक पढ़ना है, that this is the syllabus and it covers everything in my gate syllabus, then I don't think you need to go for a coaching. And obviously उनके teachers होते हैं, they you know teach you in a very good way so that you understand. If you are doing self study, it will become a little difficult for you to get the doubts cleared. So that's why I'll suggest you, if you are doing self study and all, you should form some groups, 3 to 4 groups,
one group में 3-4 लोग होंगे तो you can study and ask each other doubts and everything, so that will be very beneficial for you. Practice on, there are a lot of apps available. grade up पे है, चलो अभी अन अकेडमी हो गया, अन अकेडमी सॉरी बायजूस हो गया, हाँ बायजूस पे बहुत सारे ऐप्स है फ्री में, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना प्रोग्रेस चेक कर सकते हो, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गेट प्रिपरेशन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. 80 to 85% of the paper will come from previous year questions. So previous year पूरा चार्ट लेना है, उससे जैसे ऐसा भी ना हो कि एक भी क्वेश्चन स्किप हो, वो पूरा मतलब याद हो जाना चाहिए, इस टाइप का अच्छे से इतना प्रैक्टिस करना है. बाकी के 10 to 15% जो होते हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस, सिलेबस तो नहीं बोलूंगा, लाइक और टाइप नहीं होते, जो पहले आ चुके हैं थोड़े अलग टाइप के होते हैं. सो दैट इज डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड फाउंडेशन. I hope that Okay. answers your question. Yes, Bhaiya, my question is answered. I Sure. means according to you, I should be forming similar-minded people's group, and for now, I should be discussing our doubts in that group and going ahead and keeping track Yeah, of what we are. Yes. Okay, Bhaiya, sure. thank you very much. श्योर श्योर. बाकी ऐसा नहीं कि लाइक मेरे दोस्त 2-3 जन कोचिंग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, ऐसा कुछ प्रेशराइज होने का जरूरत नहीं है. एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन लर्न्स एट देयर ओन पेस. सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जरूरत है कि नहीं. बट हाँ, ये अच्छी बात है कि आप 2-3 जन का ग्रुप फॉर्म कर लो, तो एटलीस्ट लाइक माइंडेडनेस होगा, तो आप मोटिवेटेड भी रहोगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी. Yes, Bhaiya, thank you. यस. एनी अदर क्वेश्चंस? नॉन कोर अभी तक तो ज्यादातर गेट से आ रहे हैं, या फिर कुछ नॉन कोर में हो, किसी को अगर इंटरेस्ट है कंसल्टिंग में या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में. भैया कंसल्टिंग के लिए एक रोड मैप, लाइक प्रॉपर रोड मैप चाहिए. या आप कौन सा ब्रांच से हो दिल्ली ना? आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिकल, ओके. इलेक्ट्रिकल वालों का बहुत सही है यार, हर वो CSIT वाले में भी बैठ सकते हैं, इसमें भी कोर वालों में भी बैठ जाते हैं, सही है. सो या फॉर कंसल्टिंग आई विल से लाइक आई एम एक्चुअली वेरी न्यू टू कंसल्टिंग बिकॉज आई हैव नॉट हैड मच एक्सपीरियंस, बट व्हाट आई विल से कंसल्टिंग में तो आपको देखा ही होगा ज़्यादातर आपका टेक्निकल नॉलेज कुछ यूज़ होता नहीं है. But if you're preparing for consulting, like many, I'll say, I don't know, maybe 10 to 15 of my friends are in consulting firms right now. So what they say and what they suggested me during my interviews is that you should be very good with numbers. Like आपको लगेगा वो good with numbers ऐसा नहीं है कि आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे. You should be able to interpret the data at a very fast rate, fast at a within given time. सो उसके लिए आप अपना एप्टीट्यूड पहले इम्प्रूव कर सकते हो. बहुत सारे एप्टीट्यूड जैसे हैकर रैंक है, यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे. लाइक आपका अगर आप कंसल्टिंग फर्म में जाना चाहते हो, मैं तो यही बोलूँगा कि कॉलेज के थ्रू कैंपस प्लेसमेंट अगर आपको मिल जाए तो दैट इज़ द बेस्ट एंड द इजिएस्ट वे. तो उसके लिए तो आपको लाइक इनिशियली वही है, एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना पड़ेगा. एंड उसमें तो लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस इतने होते नहीं है, तो आप टेक्निकल पे इतना आप ध्यान मत दो. लेकिन हाँ, अपने CGPA के लिए आपको मेंटेन करने के लिए आपको ऑब्वियसली अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. सो बट यू शुड बी गुड विद नंबर्स. लाइक आपको आपकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए. एंड कंसल्टिंग में एक चीज़ है कि एक्सेल बहुत, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एक्चुअली अ वेरी पावरफुल टूल. तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज if you have that on your CV that I have done a certification or I am very proficient in Excel, that is actually, that gets you those extra brownie points. So that will actually help you a lot. So I will suggest if you want to go for consulting and all, you should be very good with Excel and PowerPoint. Because अगर आप दो कैंडिडेट्स हैं और दोनों का लाइक एप्टीट्यूड लेवल ऑलमोस्ट सेम है, सो इफ the one person has a proficiency in Excel and PowerPoint, I'll choose that guy because in sorry, in consulting ये बहुत ज़्यादा extensively used होता है. And like Microsoft Excel सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन it's actually a vast, very like बहुत बड़ा है. So if you're doing it, doing a certification in Excel, and if you're adding it on your CV, that will be very good. Like, तो it will be a star mark on your CV. तो ये तो है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी लाइक, एक्चुअली बहुत जगह जाता है, जैसे ZS एसोसिएट्स हो गए
या फिर लाइक द फॉर्म दैट आई एम वर्किंग फॉर Acuvon कंसल्टिंग, वहाँ हो गया, लाइक मैनी और बेन और PwC, EY, इसमें एक्चुअली केस इंटरव्यूज के बेसिस पे आपको रिक्रूट किया जाता है. सो केस इंटरव्यूज यू शुड बी वेरी प्रोफिशिएंट इन, लाइक इट्स नॉट कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है केस इंटरव्यूज एंड ऑल. वो आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, आपको केस इंटरव्यूज के बारे में बहुत डेटा मिल जाएगा, बहुत प्रैक्टिस कर लोगे. इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ अ मेथोडोलॉजी, इट्स नॉट समथिंग लाइक वेरी टेक्निकल और वेरी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. इट्स अ मेथोडोलॉजी. सो इफ यू लर्न दैट इट विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज वो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हो. सो केस इंटरव्यूज, एप्टीट्यूड, Microsoft Excel and PowerPoint, these are the three things that you should have that will improve your chances to get into a consulting firm. So apart from that ऐसे कुछ ज़्यादा लाइक अलग है गेट जैसा कुछ है नहीं कि हाँ मुझे स्पेसिफिकली ये प्रिपरेशन लेना है या कुछ नहीं. कंसल्टिंग का तो लाइक बिकॉज किसी भी फील्ड से किसी भी ब्रांच से जा सकते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल नॉलेज. सो या दैट्स व्हाट आई विल से. बाकी कंसल्टिंग फर्म्स में अगर आप, बहुत जन होते हैं कि अपने कोर में काम करते करते लास्ट में जाके कंसल्टिंग में घुस जाते हैं, लाइक 2-3 साल काम किया, 4-5 साल काम किया, फिर कंसल्टिंग में चले गए. सो अभी तो एक्चुअली और कंसल्टिंग का यही फायदा है, लाइक इवन इफ द मार्केट क्रैशेस कंसल्टिंग फर्म्स ऑलवेज गो अप, बिकॉज मार्केट क्रैश होगा तो कंसल्टिंग फर्म्स की डिमांड और बढ़ जाती है उस टाइम पे. सो इट्स काइंड ऑफ एन एवरग्रीन फील्ड. सो कंसल्टिंग में अगर आप जॉब लगा, इट्स काइंड ऑफ टीडियस जॉब, थोड़ा हेक्टिक है, बट इट्स रिवॉर्डिंग ऑल्सो, बिकॉज आप जितना अपना हार्डवर्क दोगे अब यू कैन रीच very high levels, and if you switch from one job to another job your salary will be hike will be unimaginable. So consulting is actually a good field to make a career in. I hope that answers your question, Dabulina. Yes भैया, thank you. Sure. Any more questions? In generally पूछ लो, कोई जरूरी नहीं है कि career related हो. Yes भैया, I have one more questions. Yeah, sure. भैया आप तो मतलब गेट का तैयारी किए थे, तो आईएएस के लिए कुछ हिंट या फिर आईएएस के लिए मतलब उसके लिए क्या माइंडसेट क्या होना चाहिए? आईएएस के लिए मैं तो बोलूंगा लाइक मेन चीज है ना आईएएस का, सिंस इसको सिलेबस बहुत ज्यादा है, लाइक इट्स ऑन द सेम रूल्स एज गेट जैसा ही है, बट अ लिटिल लाइक फर्दर स्टेप एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि पेपर्स एक्स्ट्रा होते हैं, उनका कन्वेंशनल पेपर होता है. सो इफ यू क्लियर द प्रीलिम्स देन यू गो फॉर द कन्वेंशनल. अब कन्वेंशनल पूरा सब्जेक्टिव होता है. सो देयर इज अ वे ऑफ राइटिंग कि कैसे लिखना है, बिकॉज सब्जेक्टिव आंसर्स में ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लैंग्वेज, लाइक द लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग. सो आईएएस के लिए द कोर्स दैट आई ज्वाइंड वाज एक्चुअली फ्रॉम एडीसी, वाज ईएससी एंड गेट कंबाइंड. और ऐसा आपको पता ही होगा ईएससी में एक्स्ट्रा पेपर होता है आपका ये जीएस का, जनरल साइंस. तो उसमें बहुत कुछ होता है, Yes. एथिक्स हो गया, आईटी कम्युनिकेशन, मतलब बहुत कुछ होता है, लाइक नॉन टेक्निकल बहुत हो जाता है, सिविक्स वेव्स पता नहीं क्या क्या होता है. तो एक्चुअली वो मैंने उस जीएस पेपर के लिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया था ज़्यादा, बिकॉज आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन गेट. सो दैट्स वाई आई कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स. बट if you want to go for IAS then I'll say it is a long journey, क्योंकि आपको काइंड ऑफ ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा. टेक्निकल में गेट में ठीक है, आप टेक्निकल 70% टेक्निकल है तो 70% कर लिए, बाकी मैथ भी तो टेक्निकल ही है, बाकी इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ ली. इसमें क्या है कि अलग से पेपर ही होता है, उस अलग से पेपर का अलग से कट ऑफ निकलेगा, वो भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है आपको. तो आईएएस के लिए प्रिपरेशन टेक्निकल का तो सेम ही है, मतलब थोड़ा अलग है, थोड़ा ज़्यादा है, बट वही है, तो आपको थोड़ा जल्दी प्रिपेयर करना शुरू करना पड़ेगा. बट वही है, आईएएस की भी सीट्स कम हो गई है जब से रेलवे हट चुका है, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आईएएस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स इन द कंट्री. तो एज एन इंजीनियर ऑब्वियसली सबको इच्छा होती होगी आईएएस बनने का, बट अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो यस, सेकेंड नासिर है, नासिर आपने पूछा ना ये? यस भैया. हाँ, तो आप सेकेंड, तब तो मैं बोलूँगा आप हाँ अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर देना, लाइक थर्ड ईयर से करना, अभी नहीं. तो वही है, आपको 2
स्ट्रीम्स को संभालना पड़ेगा, पहले टेक्निकल और वो नॉन टेक्निकल पार्ट। उसका तो मैथ्स का भी अलग पेपर होता है शायद, ठीक से याद नहीं मेरे को, मैंने बहुत पहले दिया था। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू गेट, लेकिन ये कोई बात नहीं है, लाइक यू हैव 2 years, सही टाइम पे आप लाइक शुरू करने का आपने सोचा है, सो इट्स अ गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आईएएस का आई डोंट थिंक हम लोग का कोई बैचमेट आईएएस में गया है, 2018 बैच से कोई गया है शायद, तो आप उनसे एक बार गेट इन टच विद देम, टेक सम टिप्स, बिकॉज हर एक एग्जाम का अप्रोच अलग होना चाहिए, और जो जिसने क्लियर किया है वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द राइट गाइडेंस, नहीं तो एग्जाम के पहले अगर आप प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आप एग्जाम को पढ़ लो पूरा, हाउ इज दैट एग्जाम, उसमें क्या है, कितने सेक्शंस है, और ये नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ना। जैसे गेट में मैंने ही 1-2 सब्जेक्ट मैंने पढ़े ही नहीं थे, मैं छोड़ के चला गया था, बिकॉज देर वॉज नॉट इनफ टाइम टू कवर इट, और उसमें से 1 या 2 मार्क्स आते थे, तो मुझे पता है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, सो मैंने वो सब्जेक्ट ही छोड़ दिए, बिकॉज आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द मोर इम्पोर्टेंट जॉब्स, लाइक सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, उसमें से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया, वहाँ से ज़्यादा आते हैं, तो वो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ प्लान कि मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, कोई वो वीक है और उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यू कैन एक्चुअली, लाइक इट्स अ सब्जेक्टिव कॉल, इट्स अ जजमेंट कॉल, बट यू कैन एक्चुअली चूज टू लीव इट ऑल्सो। सो आप प्लान पहले अच्छे से बना लो। आईएएस, या इट्स अ it will take more effort, but obviously the rewards are much better as compared to GATE. Yes, Yeah, thank you, in thank you. from 2019 batch, there is yeah, Wasim Yohana Bhaiya. So he actually cleared the exam, IES. So you can contact him, Nasir. Okay, भैया, thank Yeah. you, भैया, thank you. बस मतलब सीनियर्स से थोड़ा कांटेक्ट वांटेक्ट रखो, क्योंकि बहुत काम आएगा, लाइक नॉट इन जनरल ऑल्सो, बिकॉज अभी नेक्स्ट ईयर और बाद में आपको कभी जॉब स्विच करना हो तो आपको रेफरल जरूर लगेगा। तो सीनियर से कांटेक्ट वांटेक्ट रखो, लाइक मैं भी लाइक आई वेंट थ्रू समवन फ्रेंड्स से रेफरल मिला, लाइक दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग दिस फर्म राइट नाउ, सो इट्स रियली important to have that connectivity with your alumni, which is why I think this is a good initiative that you guys are doing. Like हम लोग के टाइम पे तो शायद स्टूडेंट alumni मीट नहीं होता था, वो खाली एमिनेंट alumni लेक्चर होते थे जो एसएसआर से करवाते थे। एसएसआर सर है क्या यहाँ पे, है क्या? नहीं, अभी नहीं एक्चुअली, लेकिन ये भी एसएसआर सर ही करवाते, मतलब ये उन्हीं के अंडर होता है, लेकिन अभी नहीं है वो, आजकल मतलब बिजी है। चलो अच्छा। बाकी और कोई मतलब इन जनरल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि करियर वाइज रिलेटेड ही पूछना है, इन जनरल। Hello. हाँ Yes, भैया, I am from first year, भैया. ओके, लाइक भैया, भाई कौन myself. है एक्चुअली? सुकुमार, अच्छा, या Yes. Can you hear me, भैया? या श्योर श्योर, गो Yeah. अहेड। Bhaiya, I am from Haldia, West Bengal. My name is Sukumal Samanta, and my department is chemical engineering. ओके, And Bhaiya, I am thinking that I am go with the core engineering because I am literally 1 month is going and the recursion is already conducted some of the code related classes. I am thinking that भैया चल क्या रहा है? What is happening there? Then I am just decided that all I am going with core, that's it. Then how to go with that? That's अच्छा, fine. या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने भी अपने आप को फर्स्ट ईयर में पूछा था। अच्छा, अभी तो आप लोग के ऑडिशन, लाइक सॉरी ऑडिशन नहीं, वो हो रहे होंगे, क्या कहते हैं उसको, ओरिएंटेशन हो रहे होंगे, क्लब रिकर्शन। क्लब ऑडिशन। हाँ, कौन कौन से क्लब आ गए अभी तक फर्स्ट ईयर वालों के लिए, कौन कौन से क्लब आ गए? मतलब अभी तो ऑडिशन शुरू ही नहीं हुआ है कुछ। आई थिंक ना, नो नो नो, आई थिंक देयर इज नो क्लब हु कैन स्टार्ट द ऑडिशन येट। ओके, देखो एक्चुअली आपका कोई सीएस का बैकग्राउंड था क्या
सुकमल? CS कंप्यूटर साइंस था 12th में। तो अच्छा, तो ये आपका लाइक इफ यू कैन आंसर, इफ यू वांट टू आंसर, आपका फर्स्ट चॉइस केमिकल इंजीनियरिंग था इसमें लाइक? नो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल। CS और अच्छा। CS और ओके। इसी मतलब इन ऑर्डर आई हैव नॉट गेट CS एंड EC। अच्छा, मतलब आपको कोर में ही जाना था इसीलिए? या अच्छा ठीक। देखो, मतलब डिपेंड करता है आपके चॉइस पे। जैसे हम लोग के यहाँ पे, हम लोग के बैच में से एक मेटलर्जी का लड़का भी अमेजोन में है, सो दैट वो कम्प्लीटली बिकॉज उसको कोडिंग में बहुत सॉरी, उसको कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो इसलिए वो अपने इंटरेस्ट से गया। लाइक डिड नॉट फोकस मच, अपने कोर सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस नहीं करता था, बट सिंस उसको कोडिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो चला गया। लाइक क्रिएट अमेजोन, अभी लाइक 28 LPA का जॉब कर रहा है ना, अभी तो बढ़ गया होगा। सो लाइक माई पॉइंट इज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। लाइक अभी आपको, जैसे बहुत भी बार बार होता है, अभी आपको लग रहा हो कि क्या है, बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा। लाइक आई ऑनेस्टली, मेरे को भी कभी लाइक CS के जॉब्स पसंद नहीं थे। लाइक कोडिंग वोडिंग इतना अच्छा नहीं लगता था कि हाँ, लाइक कोई भी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, फर्क नहीं पड़ता। लाइक मुझे कुछ कोडिंग ज़्यादा पसंद नहीं था। दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट आई टुक मैकेनिकल। आई ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर लाइक चॉइस पे डिपेंड करता है, मैं बोलूंगा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, आपका फर्स्ट ईयर में हो, मतलब आप अभी सेकेंड सेमेस्टर में हो ना? फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर, अच्छा हाँ सॉरी, आपका लेट से हुआ ना। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो मैं तो बोलूंगा कि आप लाइक गिव इट टाइम। अभी जो लग रहा है, पहले फर्स्ट ईयर में थोड़ा रहता है लाइक जोश, तो अभी मैं बोलूंगा लाइक डोंट टेक मी इन द रॉन्ग वे, आप थोड़ा टाइम दो। आप क्योंकि पहला ईयर जाने दो, फर्स्ट ईयर होने दो, उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि व्हाट डू शाइड आई शुड गो फॉर। क्योंकि इतना जल्दी, क्योंकि अभी आपका केमिकल इंजीनियरिंग के कुछ लाइक स्टार्ट भी नहीं हुए हैं ना। सो केमिकल इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड ब्रांच। लाइक पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, बट वही है, इंडिया में उतना नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक गेट के थ्रू भी है, वैकेंसीज है GL वेल में, IOCL में। बट वही है, जॉब्स भी तो आती हैं, जैसे हम लोग केमिकल से बहुत जन प्लेसमेंट होते हैं, नोवार्टिस हाँ, फोर्टिस में। इस साल 75% हो गया केमिकल का। हाँ, इस बार अब देखा मैं, केमिकल का अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस बार एक्चुअली कौन कौन सी कंपनीज आई थी केमिकल के लिए, एनी आइडिया? कोर कोर के लिए एल&टी, RIL, वेदांता, रिलायंस, HPCL, RIL, वेदांता। वेदांता थे। वेदांता 4 लोगों को लिया है, रिलायंस भी बहुत लोगों को लिया है, हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छा लेती है। और PSU भी आया है। PSU शायद EI लाया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हाँ वो भी अच्छा है। या- तो कोर तो मैं बोलूंगा कि अगर आप कोर में, लाइक केमिकल में कोर में रहना चाहते हो, तो इट्स गुड फील्ड। बाकी कोडिंग वोडिंग क्या है ना, लाइक ऐसा है कि यू शुड नो अबाउट इट, लाइक थोड़ा बहुत सबको पता रहना चाहिए, बिकॉज बिकॉज वही है कि जो सिलेबस बनाया गया है वो ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई कोर जॉब भी कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत कोड करना पड़ जाए। जैसे लाइक इट डज नॉट मैटर कि आपको पूरा एकदम हार्डकोर C++ या हार्डकोर पाइथन जावा करना है। अदर कोडिंग सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे आपको CFD कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स करना होगा, तो वो सब भी सॉफ्टवेयर होते हैं, मैटलैब वेटलैब। तो ये सब जो जैसे मैटलैब टाइप का कोडिंग है, ये दिस इज एक्चुअली लाइक रिक्वायर्ड इन एवरी ब्रांच। लाइक मैकेनिकल में भी चाहिए होता है, सिविल में भी आई गेस, केमिकल में भी चाहिए होता है, मैंने जहाँ तक सुना है अपने दोस्तों से। सो दिस टाइप ऑफ कोडिंग यू शुड एक्चुअली लर्न, बिकॉज क्या होता है, इंडस्ट्री ऐसे ही हो गया दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कोर में जाओ, लाइक दैट डजंट रियली अफेक्ट कि आपको ये पता नहीं। C++ ये सब क्या हार्डकोर है कि आपको पूरा एकदम जैसे डेवलपिंग प्रोफाइल में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर उसे। बट यू शुड नो अबाउट इट लिटिल बिट, बिकॉज एप्टीट्यूड में भी कभी कभी थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चंस कोडिंग के भी आ जाते हैं, जस्ट टू चेक योर एप्टीट्यूड, लाइक जनरल अवेयरनेस अबाउट एवरीथिंग। बट अगर आपको कोर में यू वांट टू मेक अ करियर, ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट यू, इट्स अ गुड ब्रांच, केमिकल बहुत अच्छी ब्रांच है। और अगर आप बाहर भी जाना चाहते हो, लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज आउटसाइड, ऑब्वियसली लाइक chemical engineer as a chemical engineer, one of the highest paying job in Canada and US.
अब लाइक मेनली इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सो ऐसा वहाँ पे भी बहुत सारे आपके अपॉर्चुनिटीज रहेंगे. बट दिस कोडिंग पार्ट यू शुड बी अ लिटिल लाइक थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको. जरूरी नहीं है कि आप एकदम मतलब पूरा डीपली उसको सीखो, बट यू शुड नो लिटिल बिट अबाउट इट. कभी ना कभी आपको हेल्प करेगा ही. नहीं तो ऐसा आपका आई गेस फर्स्ट सेमेस्टर में तो C++ होता ही होगा ना, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट होगा. Second semester, I think. Second semester. हाँ And तो and also, Bhaiya, one more question. Means what are teachers tell us about the subject? I can't get it. Means I have no the means the I have knowing the what is he or she is tell about something or some subject and theory. But what is your choice? If you gone through that book or let it go in your first year, what you do means. What I'm saying that if you read the book or just let it go and just sim the over and see over end sim over and that's going on and going on. हाँ, वो तो एक्चुअली 90% कॉलेज के साथ यही होता है. जस्ट एग्जाम के पहले 2 दिन पहले बुक्स खुलती हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी बिकॉज यू आर इन फर्स्ट ईयर, सो ये योर जूनियर सेकंड थर्ड ईयर वाले ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे प्रिपरेशन होती है, लाइक कैसे एग्जाम्स दिया जाता है. आई डोंट वांट टू से दिस Yes, बिकॉज exactly. Sukumal, you should ask any one of your second year bhaiya or third year bhaiya. वही है लाइक इट्स ओके. लाइक फर्स्ट ईयर में एक्चुअली क्या है ना, लाइक डोंट टेक मी इन द रॉन्ग वे, बट जोश बहुत होता है कि आई हैव टू लाइक यू विल गेट द हैंग ऑफ इट वंस यू क्लियर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर. अभी तो चलो अच्छा हो गया, हम लोग के टाइम पे तो लाइक फर्स्ट ईयर में देयर वाज समथिंग एल्स टू कीप अस engaged. So I don't want to mention this on a public platform, but या अभी तो सब नहीं है, ऊपर से ऑनलाइन है तो अभी पॉसिबल भी नहीं है. बट इट्स अ गुड थिंग. अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, इट्स गुड दैट यू हैव योर ओन इंटरेस्ट. अभी तो आपको एक्चुअली क्या है कि जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो आपने पढ़े पढ़े होंगे. फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, आई गेस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उसमें तो ज़्यादा होगा नहीं. या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी होगा, तो उसमें आपको ज़्यादा अपने ब्रांच के बारे में आपको ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. वो आपका सेकेंड ईयर से शुरू होगा. बट वॉट एवर द टीचर इज सेइंग, एटलीस्ट लाइक 2 टाइप की पढ़ाई होती है. एक होती है समझने के लिए, एक होती है मार्क्स लाने के लिए. सो वो आपको डिपेंड करता है कि आप भैया कौन सी करना चाहते हो. भैया हाँ समझने के लिए I am going with the intuition behind the subject, not mugging up and scoring the marks and at all what is going on. I am going with the intuition. What is the diffraction? How they works? How the interference works? How the electron works? हाँ, वो तो है. लाइक इट्स गुड दैट यू वांट टू लर्न, बट जस्ट कीप दैट वन थिंग इन माइंड दैट यू कैन गेट अ लॉट ऑफ बुक्स. आपको 1000 बुक्स मिल जाएंगे इंटर लाइक इसके ऊपर क्या बोलते हैं, फिजिक्स के जितने भी सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स कितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको डिफ्रैक्शन के ऊपर 1000 बुक्स मिल जाएंगे, 2000 आर्टिकल्स मिल जाएंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज मिल जाएंगे. सो यू कैन एक्चुअली हाँ पढ़ सकते हो. बट एक चीज ये जरूर याद रखना दैट आप CGP इतना लाइक उस टाइम उसके चक्कर में आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए. लाइक इट्स गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आई लाइक इंटरेस्टिंग लगता है, ऑब्वियसली इट्स रियली इंटरेस्टिंग. और पढ़ो, बट यू शुड ऑल्सो कीप दैट इन माइंड दैन डोंट let that part, let your curiosity affect your academic performance. तो आपका बिकॉज क्या होता है कि लाइक एंड सेमेस्टर में जब पेपर आएंगे, यू हैव टू राइट इन अ सर्टेन वे. जैसे टीचर ने जैसे बताया है, या यू नो वैसे ही लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे. या बहुत जगह होता था, हम लोग फर्स्ट ईयर में भी होता था कि टीचर ने जो बताया वही लिखो, एक शब्द चेंज कर दोगे मार्क्स कट जाएंगे. सो यू शुड बी स्मार्ट अबाउट इट बिकॉज एट द एंड बहुत बोलते CGPA डजंट मैटर. CGPA डज मैटर. नहीं तो CGPA का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं अगर नहीं मैटर नहीं करता. सो यू शुड कीप योर CGPA गुड. ऐसा नहीं कि हाँ 9.5 9 रखना, 8.5 से अबव रखो. एटलीस्ट आप क्या होगा, आप सब शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, लाइक कंपनीज के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे. 8 से ऊपर रखोगे तो यू शुड कीप हैव अ डिसेंट CGPA. ज़्यादा एकदम हाई शॉट होने का जरूरत नहीं है. हैव अ डिसेंट CGPA. 8 से ऊपर जो आ रहा है वो भी शॉर्टलिस्ट हो रहा है, वो भी इंटरव्यू दे रहा है. 9.5 जिसका है वो भी शॉर्टलिस्ट हो रहा है, वो भी इंटरव्यू दे रहा है. हाँ थोड़ा बहुत
डिपेंड करता है, इट्स नॉट दैट कि कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता, उनको भी फर्क पड़ता है सीजीपीए से, बट इफ यू हैव द स्किल दैट इज रिक्वायर्ड बाय द सीजीपीए वोंट मैटर मच। तो वही बोलूंगा, फर्स्ट ईयर में हो तो थोड़ा एंजॉय करो, और इट्स गुड दैट यू हैव अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, but don't let that affect your academic performance also. Like it's a personal suggestion to you, because फर्स्ट ईयर में आपको लाइक सीजीपीए स्कोर करने का आपका अच्छा चांस रहता है, बिकॉज द सब्जेक्ट्स दैट यू आर ऑलरेडी नोइंग, तो उसमें आप अच्छा सीजीपीए मेंटेन करने की कोशिश करो। बाकी सेकेंड थर्ड ईयर में जब आप ब्रांच में घुसोगे तब आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट ईयर में बस सीजीपीए मेंटेन करने बोलूँगा, यही होगा ओके मेरा भैया, सजेशन। या थैंक यू भैया। श्योर श्योर। भैया मैं साहेब गोराई, थर्ड ईयर केमिकल इंजीनियरिंग। हाँ भैया हाँ साहब। मेरा क्वेश्चन है, मतलब मैं कोर में ही फोकस्ड हूँ, पर अभी मतलब कंसल्टिंग जब बहुत आ रहा है, अगर मतलब मैं कंसल्टिंग में प्लेस्ड हो गया एंड मैं गेट के लिए फोकस्ड हूँ, पर अगर मेरे को ड्रॉप ड्रॉप लेना पड़ा और कंसल्टिंग के साथ मेरे को प्रिपरेशन कंटिन्यू करना पड़ा, तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज द थिंग इज लाइक मेनी ऑफ द पीपल हैव अ मेंटालिटी कि इवन इफ आई डोंट गेट दिस ईयर, आप जैसे अभी थर्ड ईयर में हो, आपको ऐसा मतलब फोर्थ ईयर में गए, Yes, sir. पता है फोर्थ ईयर में गए आपका प्लेसमेंट समझ लो डेलॉइट में हो गया, लाइक इस बार कितने जन को लेके गए, Yes, sir. 50 20 जन, यस यस 50 और केमिकल से 50। 9 लोग हुआ है। हाँ, तो आप समझ सकते हो कि लाइक कंसल्टिंग में कितने लोग जा रहे हैं, बिकॉज दैट्स लाइक अभी कंसल्टिंग फर्म्स का काइंड ऑफ मास रिक्रूटिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा लाइक रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो लोग, एक्सपैंड कर रहे हैं, सो इट्स अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। बट सिंस आप कोर पे फोकस्ड हो, तो आप ये लाइक अगर आप ड्रॉप दे के, नहीं ड्रॉप ना दे के, सॉरी, अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो गेट का, तो आई विल से इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बिकॉज आपका क्या है, गेट इज नॉट लाइक कैट। गेट में लाइक syllabus vast है, so you have to prepare more, and it takes much like more time as compared to other competitive exams like CAT हो गया या ZAT हो गया, GMAT हो गया, GRE हो गया। ये सब में इतना टाइम नहीं लगता है एज कम्पेयर टू गेट, और इतना कंटेंट भी नहीं है। तो मैं बोलूँगा ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, बट इफ यू कैन मैनेज योर टाइम विथ योर वर्कलोड, आई गेस कोई भी कर सकता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो यूज टू like work for a, like he did not work for a consulting firm per se, he worked for a software developer, as a software developer, and he prepared for gate also, like वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, नॉट डेवलपर, तो with while working only he prepared for gate, and उसने क्रैक भी कर दिया, and he is in a public sector job right now. So it's all depends on you, like how well you manage your time. थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं आपको like honestly बोलूंगा, because gate है, as you can understand, but it's not impossible obviously. तो कंसल्टिंग के साथ अगर आप सब बोलो, आप लाइक इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, बिकॉज डेलॉयट ऐसा है, लाइक इतने लोगों को लेके जा रहा है, तो इफ यू आर प्लेस्ड इन डेलॉयट एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यू नो लेट्स से गेट एंड ऑल, यू कैन, जस्ट यू हैव टू मैनेज योर टाइम। 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो आफ्टर 5 take a rest, like rest few hours, 1 or 2, then you can you know prepare for your subjects and all. So आप अभी इतना मत सोचो कि लाइक अगर मेरे को ड्रॉप देना पड़ेगा कि नहीं, आप अभी अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो, बाकी प्लेसमेंट्स हो जाएंगे, इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप गेट पे ध्यान दो, अभी आप ये मत सोचो कि मेरा पहली बार में नहीं हुआ तो फिर मेरे को ड्रॉप देके फिर करना पड़ा, वो अब मत सोचो, आप यही सोचो कि फर्स्ट टाइम आई वांट टू क्लियर इट, राइट फर्स्ट टाइम। तो आप पहली बार ही क्लियर करने का सोचो, उतना ज़्यादा टेंशन मत लो। बाकी केमिकल इंजीनियरिंग से आपके सीनियर्स हैं, जैसे अभी एक मेरे दोस्त है, ये उनका बार्क में हुआ है, तो आयुष, आई गेस आयुष, या और तो उनसे आप लोग से कांटेक्ट कर सकते हो, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से टिप्स देंगे केमिकल इंजीनियरिंग में। बाकी केमिकल में भी कोर जॉब्स अच्छे हैं, लाइक बहुत सारे PSUs में जॉब्स हैं। 1 minute, कैन आई एक्सक्यूज माई सेल्फ फॉर 1 minute? ओके।
Yeah, hello. Am I audible? Yes, Yes, bhaiya. bhai. Yes. Yeah. So that's what I will say. You can prepare. That's not a problem. It actually all depends on you because थोड़ा वर्कलोड होता है. बहुत जन कंफर्टेबल भी हो जाते हैं जॉब लेने के बाद तो प्रिपरेशन की छूट जाती है. You should be motivated enough to pursue it. आप यही करो, फर्स्ट ईयर ही क्रैक करने की कोशिश करो, हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक नहीं हो पाएगा. जस्ट हैव फोकस और थोड़ा एफर्ट्स दो. कॉलेज में जब तक रहोगे आपके पास टाइम रहेगा. आप एक बार जॉब लाइफ में चले जाते हो तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा उतना. 9 to 5 जॉब अगर है तो 5 days out of 7 आर गॉन देयर. सो ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा. डोंट वरी, यू जस्ट अभी आप फोकस करो, हो जाएगा क्लियर. डोंट वरी. Yes, bhaiya. Thank you, bhaiya. या श्योर. Any other questions in general, career wise? कोई ऐसे मजे के लिए? भैया संतोष, third year हाँ mechanical. या My question is, is it good to take MIM or anything related to management studies after? What is your thought on that? Management studies after BTech. अच्छा, like okay, so that again that depends on you. Like अगर आप एक बार मैनेजमेंट में जा रहे हो, समझ लो if you are going for an MBA and obviously you will be preparing for CAT. So आपको ये चीज दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा that if you are going for this field then I won't be able to switch back because आप एक बार समझ लो आपने आप IIM के लिए प्रिपेयर कर. एंड द थिंग इज लाइक इट विल बी very good if you prepare for CAT right now because CAT may fresh. Obviously, work experience does matter, but most of the students that go into IIMs are actually freshers. So, and you will have a lot of time to prepare for CAT and everything. So, it is actually a good job, like not job, good higher studies opportunity. But the thing is, you should have this thought in mind that if you once give your CAT, if you're into an IIM, say IIM Lucknow, IIM Ahmedabad, Bangalore, you do your MBA from there. Then after 2 years you'll be placed into some firm, like it may be like management consulting ho gaya ya FMCG ho gaya, any type of firm. So you'll not be able to switch back after that, like to into your core field कि हाँ core hardcore manufacturing या production उसमें उतना जाने का आपके it's not like it's impossible, but it becomes really difficult and the opportunities that you will get will be limited. So you have to take a judgment call कि do I want to go for a core job or do I want to go for this kind of job? And if you want like enter into corporate, management case field के through, then you can understand you will have to make a career in that particular line only. और third year mechanical ना, Yes. आपका कोई गेट या कोर में इंटरेस्ट नहीं, वहाँ इंटरेस्ट है क्या? तो फिर मतलब लाइन जनरल Not पूछ रहा हूँ. not gate, but maybe into the 3D design and stuff. हाँ तो डिजाइन एंड एवरीथिंग अगर आप जाना चाहते हो, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस इज completely unrelated, don't get me wrong, I don't want to discourage you from IIMs and consulting and all. I'm working in a consulting firm. So consulting is actually very rewarding and very demanding also कि आपके थोड़ा efforts लगते हैं, but it is very rewarding in terms of money, in terms of growth, everything. बाकी आपने अगर आप डिजाइन एंड ऑल में जाना चाहते हो तो फिर देयर आर प्लेंटी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी कंपनीज आती हैं. आई डोंट नो वेदर अभी कौन कौन सी आती है, बट जितनी भी ऑटोमोटिव कंपनीज आती है वहाँ पे भी डिजाइन में लेते हैं. बाकी आई गेस इसमें भी रिलायंस में भी अगर मैंने मैकेनिकल जाते हो उसमें भी डिजाइन के लिए लेते हैं. अभी आई डोंट नो वेदर ब्रह्मोस इज कमिंग और नॉट. ब्रह्मोस एरोस्पेस आई थी क्या इस बार, और मे बी प्रीवियस वन? एनी आइडिया? Yet. आई थी क्या? I don't think so, भैया. No, इस बार नहीं है. Okay, इस बार actually नहीं है. like okay, no problem. But इस other बार companies are PSU there. बिल आया था, Okay. बिल आया था एंड वेस्ट बंगाल का HCL शायद, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, HPL वो आया था. Oh, Haldia. Okay, Haldia Petrochemicals. हाँ BPCL भी आया है. BPCL अभी तक रिक्रूट नहीं किया है, BPCL भी आया है. Okay, तो एटलीस्ट ये भी है, लाइक कोर में बहुत सारी पब्लिक सेक्टर्स आ रही है, PSUs आ रही है, इट्स अ गुड थिंग.
हम लोग के टाइम पे तो आई गेस ओनली हम लोग के टाइम पे भी आई थी HPCL आई थी आई गेस ओनली अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक एंड ब्रह्मोस एंड HPCL इस बार भेल भेल भी आया है, बेल भी आया है, भेल भी आया है। हाँ तो अच्छा है लाइक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आ गया अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल्स बेल मैकेनिकल के लिए सो इट्स अ गुड थिंग लाइक यू कैन सी ना लाइक बहुत जन बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर्स में जॉब नहीं है बट पीपल आर डूइंग इट राइट लाइक इवन यू गो थ्रू गेट और यू गो थ्रू कैंपस प्लेसमेंट at the end if you land a PSU job it's settled और क्या ही चाहिए like many people prepare for 1 2 3 years also to get to land a PSU job so it depends so coming back to your question actually so yeah management अगर आप करना चाहते हो it's a very good thing I'll not like management में वही scope बहुत ज़्यादा है like if you get into a good IIM and then you're passing out from there they and like money is very good apart from that it's like work-life balance that you'll have to establish on your own. Apart from that, like growth opportunities बहुत ज़्यादा है. You like you might become maybe the managing director of one company also. Like I'm just giving you a view about how you up to the point you can reach. So IM is good. You can go for management and all. अगर आप design में जाना चाहते हो तो there are many of your alumni who are working in design and just like other design sector of reputed companies and industries तो आप उनसे रेफरल मांग सकते हो बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हम लोग कैंपस विजिट नहीं करती बट यू कैन गो फॉर दैट बहुत लाइक आपको रेफरल मिल जाएंगे कोई भी दे देगा लाइक एलुमनाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट रियली लाइक नो व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन कंपनीज आर विजिटिंग बिकॉज अपने टाइम पे ज़्यादा आई नहीं थी बट हाँ ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सब सीख के रखना आई डोंट नो अभी एसएसआर सारी सिखाते हैं क्या सिखाते हैं कैटिया या सॉलिड वर्क्स Yeah, think that and अभी CAD. अभी अभी भी कैटिया ही सिखा रहे हैं सर चलो Yeah, सो वही remote job. हाँ वही तो सीख के रखना बिकॉज एटलीस्ट एट द एंड आपको सीवी पे भरना है राइट बिकॉज इफ आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट तो आपको सीवी में कुछ ना कुछ भरना है तो बाकी ये सब सॉफ्टवेयर आप जान के रखो बिकॉज इट डजेंट टेक मच टाइम और हम लोग कॉलेज में रहने से टाइम बहुत रहता है हम लोग के पास ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम नहीं रहता अपार्ट फ्रॉम दैट फोकस ऑन CGP बाकी आपको डिज़ाइन में जॉब तो मिल ही जाएंगे डिज़ाइन में अभी एक्चुअली स्कोप बढ़ा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 1 or 2 years इंक्रीज हो रहा है लाइक डिमांड तो आपको मिल जाएंगे इसका टेंशन नहीं जस्ट ये सॉफ्टवेयर जान के रखना कैटिया मैटलैब वैटलैब भी जान के रखना और एक सर्टिफिकेशन ले लोगे यूडेमी या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से और उसको अगर आप लिंक कर दोगे अपने सीवी से तो दैट्स काइंड ऑफ चेरी ऑन द टॉप Thank you, Bhaiya. sure any other questions in general or anything Now I suppose all questions are over, and yes, Bhaiya, this has been a great learning interactive session. Means not all times we have this type of interactive session, and this time we have. And from our student alumni interaction cell under Center for Alumni Affairs and International Relations, we have a token of appreciation for you that I am presenting. sure Yes, it is visible. yeah Yes, Bhaiya, oh this is from our student alumni interaction cell. thank you guys it was actually lovely interacting with you all because बहुत दिनों बाद अपने कॉलेज के लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है so I'm really know excited I and appreciate all your efforts and keep it up you're doing a great job apart from that if you need any information any guidance in terms of anything अगर आपको कुछ पर्सनल भी कुछ कोई प्रॉब्लम हो या if you want any guidance you can always contact me आपको I'll share my I think it was Meenakshi who contacted me. So I'll get in touch with her and I'll share my contact number and my email ID with her. So and she can share it with you all guys. So if you want, you can contact me in terms of if you want referrals or anything. I hope I can help you with that also. So yeah, Yes, Bhaiya, thank you. We thank you again for your participation, and
Wish you all the best for your future and hope for more learning opportunities from you. Like whenever you visit Durgapur and nearby cities, you may come to enlighten us. Thank you, Vijay. Thank you. Sure, sure. Thank you, everyone. Thank you, everyone. I hope I was not boring, and if I was, I'm sorry for that. Apart from that, yeah. Thank you, everyone, for attending. Yes, Vijay. Thank you. Thank you, everyone. Okay, I'll drop off now. Bye Yes, bye. Vijay. Now you can leave. Okay, Vijay. Sure. Thank you. Bye.